projectile motion from NCERT at fingertips. NCERT at fingertips, wherein it's page number 64. The name of the chapter is motion in the plane. Okay, and question number 54. Now this question I have taken over here. Two balls are projected at an angle of theta and 90 minus theta. So दो balls project किए गए हैं at an angle of theta and 90 minus theta. Okay, to the horizontal with the same speed. The speed of the projection for both the balls is same. So it is with the same speed. Same speed. The ratio of their maximum vertical heights. So basically we want to find out what is h1 upon h2. So what is the formula for the vertical height? H is equal to क्या formula है बता सकते हो आप लोग मुझे? Correct. क्या बोले आप? U square sin square theta upon 2g. This is the formula for the vertical height. Vertical height के लिए formula है. So I want the ratio of h1 upon h2. मुझे h1 upon h2 का ratio चाहिए. Now their angles are theta and 90 minus theta. So let me take the ratio. If I take the ratio, this will give me what h1 upon h2 is given by. They are projected with the same speed. So this is u square sin square theta upon 2g for the first ball divided by u square sin square of 90 minus theta upon 2g. ठीक है, इसमें से u square upon 2g gets cancelled. U square upon 2g. Now this will become sin square theta upon sin of 90 minus theta is cos theta. So this is cos square theta, and that is equal to tan square theta. So the answer is tan square theta is to 1. So D is the answer. I hope this is clear to all. Is that clear? Is that okay? Okay. I'll go for the next question. Question number 55. Question number 55. So yeah, this is question number 55. क्या दिया है यहाँ पे देखिए. Two particles are projected in the air with the speed. Two particles are projected in the air with the speed u. Angles theta 1 and theta 2. Let me correct this. Theta 1 and theta 2. These angles are theta 1 and theta 2. Both acute. Okay, to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second, then which one of the following is correct? Height reached by the first one, h1 is greater than h2. अगर ऐसा दिया है. So by the way, what is the formula that we have written down for the height? Height के लिए formula हमने क्या लिखा है यहाँ पे? U square sin square theta 1. क्योंकि उनके स्पीड सेम है लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग है. Divided by 2g is greater than U square sin square of theta 2 divided by 2g. So once again this U square upon 2g gets cancelled away. So what do we say here? Sin square theta 1 is greater than sin square theta 2. बराबर है क्या? sin square theta 1 is greater than sin square theta 2. अच्छा, अब अगर आप थीटा और sin थीटा के वैल्यूज को स्टडी करते हैं तरीके से, तो थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज 0, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, sin थीटा होता है हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो sin थीटा इज 1/√2 मतलब 0.707. ठीक है, थीटा इज 60 डिग्री, तो sin थीटा इज √3/2 मतलब 0.866. आपको बता दें. एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, sin थीटा इज 1. अब देखिए यहाँ पे जो एक बात अपने को दिखाई दे रही है, व्हाट वी सी हियर इज जैसे जैसे इफ यू सी हियर जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, whenever this theta goes on increasing, तो उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बढ़ता जा रहा है. sin theta is also going on increasing. Correct? Isn't it?
सो जैसे जिसका थीटा बड़ा है उसका साइन थीटा भी बड़ा है, तो हियर आई कैन से दैट देयरफॉर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ये तो मैं बोल सकता हूँ, isn't it? I can say theta 1 is greater than theta 2. So that would be my answer. That would be my answer, isn't it? Whereas ये ऑप्शन सी दिया है T1 is less than T2, वो अगर मुझे एक्सप्लोर करना है ऑप्शन में, what is T is equal to 2u sin theta upon g, 2u sin theta upon g. तो अगर ये T1 है और T2 क्या होगा जी, T2 is equal to 2u, this is theta 1 and this is 2u sin theta 2 upon g. अगर यहाँ पर भी मैं कंपेयर कर लूँ कि भाई जिसका देखो 2u upon g ये तो कांस्टेंट या कॉमन चीज है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2u upon g, ये दोनों तरफ कॉमन है, बराबर है क्या? तो बात करेंगे साइन थीटा 1, तो अगर मुझे पता है कि साइन थीटा 1 is greater than sin theta 2 and therefore I can say that T1 is greater than T2, whereas उन्होंने बताया T1 is less than T2, so C is not the answer. Theta 1 is not equal to theta 2, T1 is not equal to T2, so what is the final answer here? Theta 1 is greater than theta 2. I hope this is clear to you all. Is that clear? Is that okay? Is this clear? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 चलिए। The ceilings let's continue. So the ceiling of a the ceiling of a hall, not printed properly. The ceiling of a hall, the ceiling of a hall is 40-meter high. For maximum horizontal distance, the angle at which the ball may be thrown with the speed of 56 meter per second, this is u, without hitting the ceiling is. Question समझ में आ गया आपको? Did you all understand the question? Ceiling is 40 meter high. Ceiling is 40 meter high. समझिए ये है ऐसा रूम। इसके बारे में हमें बताया गया है द हाइट इज 40 मीटर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द एंगल एट विच द बॉल में बी थ्रोन। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब समझा सकते हो आप मुझे? अब अगर इसको यहां से ऐसे फेंकना है तो दे आर सेइंग यहाँ पर उसको ऐसे फेंकने के बाद वो पहुंचेगा, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, कैसे कर सकते हैं? अब उसने ये बताया है द एंगल एट विच इट इज थ्रोन, द स्पीड एट विच, ये स्पीड जो है दे हैव टोल्ड स्पीड, so this speed is u is equal to 56 meter per second and this angle they say is theta. They are asking what is theta is equal. क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे करेंगे बताइए? हेलो, तो इन्होंने हमको ये बताया कि भाई ये जो मैक्सिमम हाइट है वो तो बता दिया है उन्होंने, they already told us what is the maximum height. This is the maximum height that we see. कितना है मैक्सिमम हाइट इसका?
So I'll directly say here h is equal to u square sin square theta upon 2g. ये तो हमको पता है, सही है. Let me substitute this h. h कितना है जी? h is equal to 40 मीटर. u square is 56 का square and this is sin square theta upon 2g. तो ये हो जाएगा the value of sin square theta. What is the value of sin square theta? और मुझे चाहिए इस maximum height the ball may be thrown with the speed of and the maximum horizontal distance. अब इस डिस्टेंस के साथ मुझे बस मुझे एंगल ही तो फाइंड आउट करना है. दैट्स डन देन. व्हाट इज sin square theta is equal to? Sin square theta is equal to 40 into 2 into 10. 9.8 की जगह पर 10 लेंगे अपन 56 into 56. ठीक है. अब हम इसको sin थीटा लेंगे. तो व्हाट इज sin थीटा इज इक्वल टू, देखिए दिस इज 400. 400 का स्क्वायर रूट होता है 20. 56 into 56 का स्क्वायर रूट 56 एंड दिस इज रूट 2. ऐसा कुछ तो दिया है, बराबर है. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली मैं इसको 9.8 भी ले सकता हूँ. अच्छा सो कितना आ रहा है? दिस इज u square sin square theta. What is the value you get? अगर मैं इसे 9.8 ही ले लूँ तो इसे लिखा 9.8. समझो कि मैंने उसको 9.8 ही ले लिया. 9.8. What is this going to be? This is 40 into 2 into 2 into 49 upon 10 into 56 into 56. देखो 10 चला जाएगा. 9.8 को मैंने 2 into 49 upon 10 लिखा. ठीक है. Now if I take the square root of this, इसका square root अगर मैं लिखता हूँ तो sin theta is equal to, because this is sin square theta. Now this is 4 into 4, तो ये एक बार आएगा. This is 7 into 7, तो एक 7 आएगा. And this is 56. And this is 7 8 जा and 4 2 जा. समझेगा? So this is equal to half and therefore what is theta is equal to 30 degree. 30 degree मतलब pi by 6 रेडियन. समझे? So what is the answer here? If theta is equal to 30 degree, that's the answer. Is this clear to all? Any doubts about that? Hello? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन की तरफ. इन क्वेश्चन नंबर 56, अब उसी के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा. इन क्वेश्चन नंबर 56, in question number 56, the maximum horizontal distance covered by the ball will be. Maximum horizontal distance मतलब उन्होंने यहाँ पर अपने को क्या पूछा है? R पूछा है. तो R is equal to, what is the formula for that? R is equal to u square sin 2 theta upon g. तो बस सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. u square मतलब 56 into 56, बराबर है क्या? sin 2 theta. Now theta is equal to हमने 30 डिग्री कैलकुलेट किया है. So 2 theta is equal to 60 degree. And sin of 2 theta is sin of 60, that is root 3 upon 2. So this will become into root 3 upon 2 divided by g. तो g I'll take it as 9.8. ठीक है. 9.8 लेंगे 10 लेंगे कोई बात नहीं. तो you just have to do this by the calculator. Calculator से करना पड़ेगा आपको. क्या हो रहा है जब इसको यूज करते हैं बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है.
So the answer comes out to be 277.12. या फिर अगर मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लूँ, पर अगर मुझे यहाँ पर आंसर इन द फॉर्म ऑफ रूट 3 दिया है, तो आई कैन टेक दिस एज 10. I can write this as 56 into 56 into root 3 upon 10 into 2. So 220 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. That is 28 into 56. Now I have to take this chart. So 86 upon 10. So this is 156. 156.8 root 2. Sorry, root 3. 156. अब इसको अगर मैं 9.10 लेता हूँ तो इतना आएगा. अब 9.8 लेने से which is the nearest answer for 160 root 3. Is this okay? Is that clear? Okay. I'll go for the next question now. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया है क्वेश्चन देखिए. Get the question carefully. The question says, if R and H present horizontal range and the maximum height of the projectile, then the angle of the projection with the horizontal is. So R और H दिया है. They want the expression for theta. Theta पूछा. So let us write down the expression for R and H. R क्या होता है? R is given by u square sin 2 theta. आप बता सकते हैं मुझे? U square sin 2 theta upon G. And H is given by, what is H is equal to? If I write there, what is H? बताइए. H is equal to, बोलो. H is u square sin square theta upon 2G. Now let me take the ratio of these two. Let me take the ratio of these two. I'll take the ratio. क्या मिलेगा बताइए. तो दिस विल गिव मी, बोलिए क्या मिलेगा. H upon R. क्योंकि हर जगह पर मुझे H upon R, H upon R, R upon H ऐसा ही कुछ दिख रहा है. So what is H upon R is equal to, देखिए u square gets cancelled, G also gets cancelled. और sin square theta upon 2, और डिनोमिनेटर में है sin 2 theta which is 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta, इसमें से एक sin theta कैंसिल हो जाएगा. तो what is H upon R is equal to, can you please tell me? ये upon 1 है तो ऊपर चला जाएगा. So what is this going to become? Sin theta upon 2 into 1 upon 2 cos theta. So that means ये क्या बनेगा. अब देखिए ये 2 into 2 4 होगा, वो जिसको मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा, तो दिस विल बिकम 4h upon r. You understand that? Is equal to sin theta upon cos theta, that is tan theta. And therefore what is theta is equal to tan inverse of 4h upon r. Okay, this is clear to you all. Is that clear? So tan inverse of 4h upon r. C is the answer. Is that clear to you all? Hello? Okay, we'll go for the next question now. Question number 59. Okay. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 59? Let me see here. Yeah, question number 59. When air resistance is taken into account while dealing with the motion of the projectile, which of the following properties of projectile shows an increase? कौन कौन से प्रॉपर्टी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं तो बताएं. तो इन्होंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं. there are 4 options here. Let's talk about these options now.
when the projectile is when the air resistance is taken into account. Which of the following properties shows an increase? बोलिए कैसे करेंगे? एयर रेजिस्टेंस अगर होगा वहां पे and whenever there is air resistance, अब देखिए हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, when we talk about the projectile motion, I think you all remember कि यहाँ पे देखिए projectile it starts from here और यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि उसका horizontal component of velocity remains constant. You remember that? At every point, its horizontal component of velocity will remain constant. I hope you remember that, isn't it? तो horizontal component of velocity जब constant है, इसका मतलब है हम बात करते हैं कि there is no air resistance, बराबर है? लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम 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 होता हुआ नजर आएगा, विल गो ऑन डिक्रीजिंग. समझे क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा. समझ में आ गया? तो ये जो रेंज है वो अपने आप कम हो जाएगा. सो द रेंज विल डिक्रीज. दे वांट इंक्रीज, शोज एन इंक्रीज. तो रेंज इज गोइंग टू डिक्रीज हियर, isn't it? So that is not the answer. Range is going to decrease, so this is not the answer. दूसरा मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट के वाले क्या हो जाएगा बताइए? h. h इज इक्वल टू, अब एयर रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है, तो इसकी वजह से h will also decrease, isn't it? तो ये भी डिक्रीज होगा. स्पीड एट which it strikes ground. देखिए अगर ये वाला वेलोसिटी कम हो रहा है, if the horizontal velocity is getting reduced, तो the vertical velocity also gets reduced, जिसकी वजह से जो resultant velocity यहाँ पर आएगा with which it strikes ground, क्योंकि यहाँ का velocity जो था वो कम हो चुका है, तो जिसकी वजह से जो resultant velocity भी कम होगा. So there is decrease in the maximum velocity also, the velocity with which it strikes ground. So what is the only option left here? The angle at which the projectile strikes the ground. हाँ, जिस एंगल से वो जाएगा ऊपर जाएगा उसी एंगल से वो स्ट्राइक करेगा, याद रखिए, isn't it? So the angle will not change, but बाकी सारी चीजें definitely change होगी. So this will, so अब angle actually increase होगा. I'll tell you why. Actually angle increase होगा क्योंकि यहाँ पर उसके जो components है, एक horizontal component है और एक vertical component है. अब ज्यादा फर्क उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इतना था वो अब कम होगा. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो रहा है तो जिस एंगल से वो गया था उससे भी ज्यादा एंगल होगा यहाँ पर. इट विल बी स्ट्राइकिंग विद द मोर एंगल. व्हाई? क्योंकि ये कंपोनेंट ज्यादा बड़ा था वो कम हो चुका है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. सो देयर विल बी इंक्रीज इन दिस एंगल एंड दैट्स द आंसर. इज दैट क्लियर टू ऑल? प्लीज चेक. So this was a theoretical type of question. अब शायद आपको एक चीज पता होगी, मैं आपको बता दूं बिफोर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक किसी का मेरे ख्याल से ऑडियो चालू है, ऑडियो बंद कर दो. किसका ऑडियो चल रहा है? आवाज आ रही है. अपन ना प्लीज तुम्हारा माइक बंद कर दो. अपन ना प्लीज पुट योर माइक ऑफ. यस. ओके, चलिए होता है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, so before I proceed for the next question, now let's consider that there is a projectile. समझोगे ये प्रोजेक्टाइल, और अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करता हूँ तो रेंज इज मैक्सिमम एट what angle? I already know this. The range is observed to be maximum at 45 degree angle. The range is maximum at an angle of, so when theta is equal to 45 degree, r is equal to r max.
which is equal to u square upon 2g, बराबर है क्या? which is equal to sorry u square upon g, isn't it? Okay. ये बताइए कि अगर एंगल इससे कम होगा, समझो 30 डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का अगर एंगल होगा तो जो रेंज है वो कम होगा ना, range will be somewhere over here. This is for theta is equal to 30 degree. And the same range you will get for theta is equal to 60 degree also. Let me tell you this. Theta is equal to 60 degree के लिए आपको same range मिलता है जी. Landing point same ही होगा, सिर्फ maximum height change होगा. Are you understanding what I'm saying there? Isn't it? Similarly, suppose और एक मैं angle choose करता हूँ. I'll choose one more angle. I'll say theta is equal to 30 और 45 के बीच में है. सो लेट मी से दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री. अगर थीटा इज इक्वल टू मैंने 40 डिग्री लिया तो ये जो प्रोजेक्टाइल जाएगा ये पहले के मुकाबले नो डाउट थोड़ा सा दूर जाएगा 40 डिग्री पर. सो दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है. एंड द सेम थिंग यू विल गेट फॉर थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्सो. For theta is equal to 50 degree also you get the same angle, same range. तो क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? थीटा इज इक्वल टू 40 और 50 डिग्री के लिए यू गेट दिस. थीटा इज इक्वल टू 30 एंड 60 डिग्री के लिए यू गेट दिस. एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए यू आर गेटिंग दिस. समझ में आ रहा है बात? इज दिस क्लियर टू यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ओके. सो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए, थीटा इज इक्वल टू 30 और 60 डिग्रीज के लिए ये सेम ही रहेगा. ओके, समझे क्या? तो मैंने सेम कलर के दिखाया, देखो ये 30 और 60 दे विल बी लैंडिंग एट द सेम पॉइंट. तो इसमें व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस? इसका स्पेशलिटी है कि ये जो दो एंगल्स है इसका एडिशन 90 डिग्री. सो इन सब का जो एडिशन है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका एडिशन भी अगर आप देखते हो तो 90 डिग्री होगा. आई होप दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वन हैज टू रिमेंबर. If the range is same, R1 is equal to R2 if theta 1 is theta and theta 2 is 90 minus theta. ये प्रॉपर्टी है. चलिए, we'll make use of this property in solving the next question. So अगला क्वेश्चन वही बोल रहे थे, आप चेक करो. What does it say? It says two projectiles are fired from the same point with the same speed. Speed is same. u1 is equal to u2. Speed is same. That means u1 is equal to u2 is equal to u. And the speed at the angles of projection 60 degree and 30 degree. 60 degree and 30 degree. The addition is 90 degree. So the range will be same. So the range same होगा. Is that clear? इसमें कोई सोचने की बात नहीं है. Next question I go for question number 61. Galileo writes about the angles of projection. क्या दिया है यहाँ पे? Galileo writes about Galileo writes that for angles of projection of a projectile at angles theta is 45 plus theta and 45 minus theta. The horizontal ranges described by the projectile are in the ratio of if theta is less than or equal to 45. अगर उसके ये एंगल्स है, then what we say about the ranges? What is the range? मतलब
There are two projectiles जिसका पहले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री प्लस थीटा एंड दूसरे का है 30 is equal to 45 minus theta. So we have to comment about the ratio R1. कैसे करेंगे the question? Well, let's say I'll take the ratio R1 upon R2. By the way, R is given by u square sin 2 theta upon g. U square sin 2 theta upon g. So this is given by u square sin of 2 times 45 plus theta upon g. Whole thing divided by this is u square sin square. No, sin square नहीं, only sin 2, no? Sin square नहीं, so sin 2 होगा. U square sin 2 times theta, that is 45 degree minus theta upon g. क्या क्या कैंसिल होगा जी यहाँ पे? u square upon g तो कैंसिल हो जाएगा. now ऊपर रहेगा sin of 90 plus 2 theta और नीचे क्या आएगा? sin of 90 minus 2 theta. Sin of 90 plus 2 theta. All silver teacups. Second quadrant sin positive. बराबर क्या? तो ये प्लस आएगा. Sin changes to cos. So we have cos 2 theta upon sin of 90 minus 2 theta is again cos of 2 theta. So what is likely to happen there? This is equal to 1 is to 1. So the answer is C. Is the question clear to all? Is that okay? I hope this is clear to you all. We'll proceed for the next question. Question number 62. देखिए क्या दिया है यहाँ पे. जी देखिए. A cricket ball is thrown at a speed of, this is u is equal to 30 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. Theta is equal to 30 degree. The time taken by the ball to return to the same level is, the time of flight पूछा है. G is equal to 10 meter per second square. Formula, substitution, answer. This type of question. So it is simply T is equal to 2 sin theta upon G. 2 u 30 sin theta sin 30 is half and G is 10. So 2 where or 0 where. So the answer is 3 seconds. And that's so silly and simple. Is this clear to you? Any doubts about that? Any doubts about that? In the question number 62, अब इसी को पकड़ के चलेगा 63 में and 64 also. दोनों क्वेश्चन उसी टाइप के. एक में शायद मैक्सिमम हाइट पूछा होगा और दूसरे में रेंज पूछा होगा. देखिए गौर से. I'll leave it to you. I will not solve these questions क्योंकि एकदम ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन नंबर 62 देखिए यहाँ पे क्या पूछा है. They are asking the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level is. मतलब इधर रेंज पूछा है ना. What is the formula for range? U square sin 2 theta upon g. Find out कर लेना. और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? The maximum height at 10. So h is equal to u square sin square theta upon 2g. So these are your homeworks I need to. Is this clear to all? We'll go for the next question. I hope this is clear to all.
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, a cricketer, देखिए क्या दिया है। A cricketer can throw a ball to the maximum horizontal distance of. A cricketer can throw the ball to the maximum horizontal distance of. The maximum horizontal distance will be applied. This means it is Rmax of 100 meter. I hope this is clear to you. Rmax है ना ये, isn't it? And Rmax, R is equal to U square sin 2 theta अपॉन G होता है। लेकिन Rmax का मतलब क्या होता है जी? Rmax का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जिसके कारण, जिसके चलते ये बन जाता है U स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल टू 100। आई होप दिस इज क्लियर। और क्या दिया है यहाँ पे? विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड बोले तो ये वाला स्पीड। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? तो इसी स्पीड से अगर वो खींचता है तो एच कितना होगा? वेल, एच के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? समझे? तो इतने ही स्पीड से वो फेंकेगा। कितने स्पीड से? भाई इतने स्पीड से। इतने मतलब कितने? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100g। अब देखिए उसने बोला है कि भाई वो जो बॉल है उसको ऊपर फेंका गया है, तो माइट भी हम उसका हाइट नहीं चाहते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉल को वो ऐसा सीधा सीधा ऊपर भी तो फेंक सकता है, तो सीधा सीधा ऊपर फेंकेगा। तो फॉरगेट अबाउट दिस एच थिंग, ये जो हमने एच लिखा है, एच को छोड़ दीजिएगा। हाउ मच हाई के लिए एच को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई अगर उसको फेंका है तो यू ये जो रहेगा, और वहां पर ऊपर जाने के बाद बॉल का जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बराबर है क्या? फाइनल वेलोसिटी, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज माइनस जी। और उसके लिए मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नो, इनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी u square, but u square is equal to 100g माइनस 2 टाइम्स g, और s मुझे पूछा गया है, तो ये 2gs उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2gs is equal to 100g। g gets cancelled, so s is equal to 50 मीटर। कितना ऊपर चलेगा वो? 50 मीटर is the answer। is this clear to you? समझ में आ गया सबको? हेलो हेलो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How many participants are there? Can I know? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An aeroplane is flying horizontally. An aeroplane is flying horizontally with a speed of 360 km per hour. तो ये है एरोप्लेन, चलिए वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। What is the speed at which it is flying? I say this is 360 km per hour. Kilometer per hour, 360 into 5 by 18, that is meter per second. 18 twos are. So what is the speed with which is going? 100 meter per second. Isn't it? This is the speed at which the airplane flying. Releases a bomb at a height of 490 meter from the ground. Okay. इसका हाइट अबव द ग्राउंड दिया है, हाइट अबव द ग्राउंड इट्स 490 मीटर। यहाँ से अगर उसने कोई बॉम्ब रिलीज किया तो नेचुरली दिस बॉम्ब विल हैव दिस वेलोसिटी एंड इट विल ट्राई टू ट्रैवल लाइक दिस,
ऐसा ट्रैवल करके तो यहाँ पे so this is the point at which if g is equal to 9.8 it will strike the ground at अब ये कितना डिस्टेंस है वो उन्होंने पूछा they are asking what distance on the ground it will strike they want us to find out what is so what is this distance this is clear x is equal to question mark पूछा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको this is part of the projectile motion so we will have to analyze its vertical and horizontal motion separately समझेगा so I'll analyze its vertical motion पहले उसका मैं vertical motion की बात करूंगा तो vertical motion is analyzed here कैसे करेंगे उसके लिए बताइए मुझे उसको कौन से फॉर्मूले मुझे पता है देखिए इनिशियल यहाँ से जब वो जा रहा है तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी and this is the initial velocity in the x direction initial velocity in the y direction is 0 क्योंकि उसके पास सिर्फ horizontal velocity है I hope this is clear to all जब वो नीचे आता है तो यहाँ पर वर्टिकल मोशन में जो है आई नो इट्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 और उसका डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आता है आई एम डिस्कसिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन सो उसका डिस्प्लेसमेंट इज -490 मीटर क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है acceleration due to gravity in the y direction is that is minus g that is equal to -9.8 meter per second square so this is इनको कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है इसकी मदद से मैं शायद टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ बराबर है क्या I can find out what is the time of flight with the help of this टाइम कितना लगेगा so I'll use the formula sy is equal to uyt minus half gt square sy is -490 uy is 0 तो ये पहला टर्म 0 आएगा माइनस हाफ इंटू जी इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बिकम 490 इंटू 2 अपॉन 9.8 is 9.98 into 10 that is equal to t square so this is 249 the 49 10 the so what is t square is equal to 100 and therefore t is equal to 10 seconds the ball या whatever object is there it is in the air for 10 seconds अब मैं इसका हॉरिजॉन्टल मोशन ट्रैक करूंगा हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ए टू बी ट्रैक इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ए टू बी उसके लिए एक ही फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही वेलोसिटी विद व्हिच इट इज ट्रैवलिंग उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगा बताइए this is the horizontal velocity which is going to remain constant 100 meter per second so let me substitute here this will become horizontal velocity which is 100 meter per second and time here 10 seconds so this is equal to 1000 meter or it's going to fall at 1 kilometer distance so what is the answer here C 1 kilometer is this clear to you well I'll call this as a star या half star problem क्या बोल सकता हूँ इसको मैं हाफ स्टार या समथिंग लाइक दैट थोड़ा सा अच्छा टाइप का प्रॉब्लम था आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट एनी डाउट सो फार हेलो एनी डाउट सो फार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 now this is again a star problem that question number 67 which I'm going to solve आप लोग मार्क कर सकते हैं it's a star question देखते हैं क्या दिया यहाँ पे a ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance of 17.3 meter from the base of the tower,
the height of the tower is? Very interesting question. I'll regard this as a star problem. कि भाई एक टावर है, उस टावर के यहाँ से एक बॉल जो है वो फेंका गया। ओके, चलो फिर से ये रहा वो टावर, यहाँ से बॉल को फेंका गया। The ball is thrown at what angle? 30 डिग्री। यहाँ से बॉल अगर फेंका गया तो एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलिए, यहाँ से बॉल को अगर फेंका गया at an angle of 30 degree, 30 degree, with the velocity of u is equal to 10 meter per second, 10 meter per second। तो ये बॉल कुछ इस प्रकार जाके यहाँ पे गिर जाएगा। ओके, हमें बताया गया है कि द डिस्टेंस एट विच द बॉल फॉल्स, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पर बॉल गिर जाता है, is 17.3 meter। x is equal to 17.3 meter, x is equal to 17.3 meter। तो इसका हाइट पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? नो, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे इस बॉल का उसका वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करें, इफ आई रिजॉल्व इट्स वेलोसिटी, ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? ux होगा। I'll say it will have the horizontal velocity which is given by ux, that is equal to u cos 30, isn't it? That is 10 cos 30, isn't it? Similarly, it will have the vertical component of velocity, okay, ऐसे होगा, which is given by uy, which is equal to u sin 30, that is equal to 10 sin 30. Sin 30 is half, so this is 5, ऐसा कुछ बनेगा uy। उसका horizontal velocity पता है, so I'll consider its motion from point A to point B। I'll consider its motion from A to B, but in the horizontal direction। horizontal direction में उसका अगर motion consider करेंगे तो horizontal velocity is equal to, बोलिए, horizontal distance is equal to horizontal velocity into time। horizontal distance is 17.3 meter। horizontal velocity कितना है देखिए, this is 10 into cos 30 is root 3 by 2, which happens to be 10 into 0.8, 0.87, something like that, 3.160, yeah. So this will become 0.866, so that will become 8.66 meter per second। So let me substitute here, this will become 8.66 into time t, now which fell t is equal to 17.3 upon 8.66, 8.66 का डबल होता है देखिए, so time is 2 seconds, very simple, the time is 2 seconds। अब मैं वही डिस्कशन करूंगा from A to B, but this time I'm considering it in the vertical direction। I consider the same thing in the vertical direction। तो vertical direction में अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो अगेन I'll use the formula S is equal to ut plus half at square, ut plus half at square, या sy, uy and ay। तो व्हाट इज द sy मतलब यहाँ से निकलने के बाद वो जब वापस आता है, देखिए a से निकलने के बाद जब वो वापस आता है तो पहले उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, बाद में इधर आके दोबारा सी हाईएस्ट पॉइंट पर उसका कौन सा था,
देखिए यहाँ से जब वो निकलता है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद वो डिस्प्लेसमेंट अगेन निगेटिव होता जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, और यहाँ से वो टोटली निगेटिव होता जाएगा। तो यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो ए के मुकाबले बी का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू -100। सो व्हाट आई राइट हियर, दिस इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू -100 मीटर। इसका वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, it is equal to u sin theta 10 sin 35, 5 is the answer here, so this is 5, upward direction में इसलिए वो प्लस आएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर per second. Time of flight we already know, this is 2 seconds, and ay that is equal to minus g, that is equal to -10 meter per second square. Let me substitute, so what I'll get there, where sy is equal to sy 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 मुझे 100 से है, जो तो फाइंड आउट करना है। sy is a question here, 1 second यहाँ पर, हाँ sy is a question for me, so I'll substitute here uy, that is 5 times 2 seconds minus half g, it's 10, and t square, 2 square, that is 4, so 2 to the 4, so ये कितना आएगा 5 to the 10 minus 10 to the 20, so the displacement is -10 meter, that means height of this is 10 meter, कितना है उसका height 10 meter, so D is the answer. Is this clear to you? Please check whether this is clear. Hello. Question number 68. This is a star problem. मैं स्टार बोलता हूँ, आप लोग बाद में बता देते हैं स्टार है क्या दिया। The speed of the projectile, notification आ गया। See, the question says the speed of the projectile at its maximum height is this times its initial speed. मैक्सिमम हाइट का जो स्पीड होता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से अबाउट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट। अगर ये है प्रोजेक्टाइल, तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होता है, एट द मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, बराबर है, वॉट एवर वेलोसिटी इट इज देयर इट इज बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, and the horizontal component always remains constant, which is equal to, अगर उसका यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया था u से making angle theta, then it will have the horizontal component as ux is equal to u cos theta, और ये component constant रहता है, so this is equal to u cos theta. So they say this is root 3 by 2 times the initial speed. Initial speed is u, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिलता है वही cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये u और u gets cancel and cos थीटा इज इक्वल टू root 3 by 2, and therefore what is theta is equal to, the angle of projection is 60 degree. I get the angle of projection if the range of the projectile is p times the maximum height attained by it, then p equals, अब यहाँ पर range of the projectile it's p times the height attained. What is the range is given by, range is given by, बोलिए, ये cos theta is this, तो ये 30 डिग्री आएगा ना, 60 नहीं आएगा, सॉरी, this is 30 डिग्री ना, theta is equal to 30 डिग्री, correct, this is 30 डिग्री, okay. Now range is given by u square sin 2 theta upon g is equal to p times the height. The height is given by u square sin square theta upon 2g. Substitute कीजिएगा तो u square upon g gets cancelled, ठीक है, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta is p times sin square theta upon 2, इसमें से एक sin theta cancel हो जाएगा. Now let me substitute theta is equal to 30 degree that I know, और ये 2 को भी मैं इधर भेज देता हूँ, और
let me just substitute here 2 into cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. It's p into half of sine theta, that is sine 30. Sine 30 is again half. So this gets cancelled, and therefore what is this going to give me? P is equal to 4 root 3. P is equal to 4 root 3. Well, that's the answer. मुझे पता नहीं मुझे इसको स्टार बोलना चाहिए या हाफ स्टार बोलना चाहिए, आप जो भी आपको लगे, but it's a good question. I'll go for the next question. Question number 69. I'll go for the next question. That is question number 69. This is the case of projectile motion on the inclined plane. तो इसको मैं स्टार बोलूँ या डबल स्टार बोलूँ, जो भी है. This is the topic here is projectile motion on inclined surface or on inclined plane. Inclined plane. तो इसमें क्या करना पड़ता है? Let me explain here. इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके लेना चाहूँगा. ये रहेगा, देखिए यहाँ पे. अब इस डायग्राम में what we do here is, किसी का माइक चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए, प्लीज क्लोज द माइक. तो यहाँ पर मैं जो x और y एक्सिस कंसीडर करने जा रहा हूँ, प्लीज चेक इट. I'll say that the x axis, this is something new for you, please check. X axis में इस डायरेक्शन में ले लूँगा. This is the direction for x axis. और y axis जो होगा वो मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y डायरेक्शन. This is the perpendicular direction. I hope this is clear to you all. ये y डायरेक्शन होगा, ठीक है. एंड अगर यहाँ पर पार्टिकल है, समझो दिस इज द पार्टिकल, या पार्टिकल कहीं पर भी होगा, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग लाइक दिस, समझे क्या? और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैं रिजॉल्व करना चाहूंगा. प्लीज चेक इट. I'll resolve this gravitational acceleration like this. ये उसका एक कंपोनेंट होगा और उसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, समझे? अब देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है, if this angle is alpha, तो necessarily ये भी अल्फा ही होगा. This is also alpha. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम g कहते हैं, उसका एक कंपोनेंट जो होगा वर्टिकल y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द y डायरेक्शन, इज गिवन बाय g cos alpha, and acceleration due to gravity in the x direction तो होगा g sin alpha. और दोनों भी माइनस होंगे क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन उधर है एंड ax is acting in this direction. पॉजिटिव y डायरेक्शन ऊपर है लेकिन ay is acting in the downward direction, तो दोनों के दोनों माइनस होंगे. प्लीज रिमेम्बर दिस. दिस इज क्लियर टू ऑल? ओके. अब यहाँ पे so this is angle alpha. Alpha is the angle of inclined plane. Alpha is inclined plane angle. Inclined plane angle.
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो बीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो बीटा है, जिसको हम थीटा कहते हैं। समझ में आ गई बात? दिस इज क्लियर नाउ। तो इन दिस केस अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दूं, इफ आई रिजॉल्व द एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं इसे रिजॉल्व कर लूं, देखिए यहाँ पे दिस विल बिकम यू एक्स एंड ये तो यू एक्स है हमारा, एंड यू आई क्या होगा यहीं से ये समझे? तो यू एक्स क्या होगा तुम्हारा, यू एक्स इज इक्वल टू यू cos बीटा and ui is equal to u sin beta. This is ui and this is ui. Is that clear to you all? Acceleration in the x direction, acceleration in the y direction, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पर दोनों भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होंगे। In this case, both x as well as y, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा और यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। Please remember this. Is this clear to you all? Is this okay? Okay? हो गया? So let's continue. Now we will consider its motion from A to B. I'll consider its motion from A to B. Please understand. I'll consider its motion from A to B. एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कहाँ से मैंने किया? रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था, but this is first time apply। क्या किया था इसमें इन शॉर्ट, अगर आप देख सकते हो तो you look at this. I consider its motion from A to B. I want to switch on the recording. पहले मैंने A to B उसका मोशन अलोंग द y डायरेक्शन कंसीडर किया। shall I explain this once again for your sake? आप लोगों को ये अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, दोबारा एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, I'll just take this diagram और एक बार उसको और एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। ठीक है ना? What do you say? I'll explain this explanation once again. Please check here. आप देखें यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा एक बार करेंगे। जी देखिए ये डायग्राम है यहाँ पे। तो इसमें as I told you that we will be taking the x and y axis कैसे लेने वाले हैं। I'll take the x axis like this. Just have a look at this one second. This is the x direction और ये रहेगा तुम्हारा y डायरेक्शन, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, तो उस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। I would say the gravitational acceleration due to gravity is going to act in the downward direction, जैसे कि ऐसे नीचे एक्ट करेगा gravitational acceleration, बराबर है। ऐसे दिस इज g, अब इस g के मुझे कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे यहाँ पे। I have to consider its components, so I'll consider its component along the negative y direction। देखिए y direction के opposite है ये, and there is one more component that I'll have to consider along this, which is along the negative x direction। तो गौर से अगर देखेंगे
अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा. And this component of acceleration, I'm going to call this as acceleration in the y direction, which is equal to minus g cos alpha. And this acceleration which is in the negative x direction, I call this as ax, which is equal to minus g sin alpha. समझे? उसी प्रकार से यहाँ पर हम उसके उसी प्रकार से यहाँ पर हम उसकी जो वेलोसिटी है, whatever the velocity this has got, उस वेलोसिटी को भी मैं यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहूंगा कि जैसे ये देखिए एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा like this and one more जो कि यहाँ से ये ऐसा. ठीक है. Now alpha is the angle of inclined plane and beta is the angle of projection with respect to the inclined plane. तो ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट ये होगा उसका ux, that is equal to u cos beta, और ये होगा उसका uy which is equal to u sin beta. This point I'll call this as a, this point I'm calling it b. Very simple. I'll consider its motion from a to b, एक बार along vertical और एक बार along horizontal. तो पहले मैं कंसिडर करूंगा its motion from a to b in the vertical direction, और जिसको हम कहेंगे y direction. Y direction में जब हम कंसिडर करते हैं from a to b, I'll use the formula sy is equal to uyt plus half ayt square. sy a से b तक जब जाता है there is no displacement in the y direction क्योंकि same level पर वापस आ रहा है on the inclined surface, so this is equal to 0. uy, what is uy here? U sin beta. I would say this is u sin beta. Okay. Time is t. यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए उसको टाइम लगेगा समझो t. That is equal to plus half ay. अब याद रखिए ay is minus g cos alpha, so this is minus g cos alpha into t square. Now this being the minus term मैं उसको इधर ट्रांसफर करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा half g cos alpha into t square is equal to u sin beta into t. इसमें से एक t कैंसिल हो जाएगा, so what is the time of flight that we get there? 2u sin beta upon g cos alpha. I'll call this as equation 1. Once again I'll consider its motion from a to b, but this time in the x direction. तो उसका मोशन along a to b है. तो now remember यहाँ पर दोनों के दोनों जो मोशन है along x as well as along y, दोनों के दोनों जो मोशंस है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन along y as well as x. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन बोथ डायरेक्शंस. ठीक है. सो चलिए अब x डायरेक्शन में अगर मैं इसका कंसीडर कर लेता हूँ क्या बन जाएगा, अगेन sx is equal to uxt plus half axt square, isn't it? तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से a से b तक जाने के उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये रहा l. सो आई राइट दिस एज l uxt, ये रहा ux, u cos beta, और टाइम तो उतना ही है t, ये रहा टाइम 2u sin beta अपॉन g cos alpha प्लस हाफ, एक्चुअली ये माइनस होगा, व्हाई? बिकॉज ax इज माइनस, ax माइनस है हमने यहाँ पे देखा, ठीक है. ax इज माइनस g sin alpha, दिस इज माइनस लिखा मैंने g sin alpha इंटू टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके लिख दिया मैंने अपॉन
अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका जी एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ एंड 2 टू द 4। तो एलसीएम होने के लिए मुझे यहाँ पर ये देखिए जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर जी कॉस अल्फा है, तो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ से कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा और cos अल्फा से डिवाइड कर लूंगा, तो जी cos स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा, जी cos स्क्वायर will be common in the denominator. बाय द वे न्यूमरेटर में क्या क्या कॉमन अपने को दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए प्लीज। न्यूमरेटर में कॉमन दिख रहा है यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर है 2u स्क्वायर साइन बीटा, 2u स्क्वायर साइन बीटा, so I'll write here 2u स्क्वायर साइन बीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से। तो ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन बीटा गया तो बचा सिर्फ cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस इधर से 2u स्क्वायर साइन बीटा गया तो एक साइन बीटा बचा है, एक साइन बीटा बचा और एक साइन अल्फा बचा, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, समझे, and that will give me the expression for L. So what is L is equal to ultimately, because this is cos A cos B minus sin A sin B cos of A plus B. So this is 2u square sin beta cos of alpha plus beta whole thing divided by g cos square alpha. Is that clear? And that is option C. That's the answer. This is one of the derivations. एक्चुअली ये मैंने दो बार एक्सपीरियंस नहीं किया, दूसरी बार रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रह गया था इसलिए दोनों, और ये इम्पोर्टेंट था तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर राइट नाउ, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज वन सच वेरी गुड प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। Four bodies A, B, C and D, they are projected with equal speeds. सबका स्पीड सेम है, इनको इक्वल स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, they are projected with equal speeds having angles of projection 15, 30, 45, 60 with the horizontal. The body having the shortest range is, कौन सा बॉडी सबसे कम रेंज में होगा। Now we know that R is given by R is equal to u square sin 2 theta upon g, बराबर है क्या, u square sin theta। So we know that range is directly proportional to sin of 2 theta and which is directly proportional to 2 theta which is directly proportional to theta। तो जिसका रेंज कम और जिसका एंगल कम उसका रेंज कम, so which is the shortest angle, 15 degree। So this will be the R shortest, so that is body A। Is this clear to all? समझ में आ गई बात? Is that okay? We go for the next question now. A player, question number 71, question number 71 क्या दिया है देखते हैं। A player, how many participants are there right now? 5। A player kicks off a ball at a speed of 20 meters per second, so that its horizontal range is maximum. Horizontal range is maximum, theta is equal to 45 degree, okay, and maximum range is given by u square upon g because theta is equal to 45, बराबर है। Another player 24 meters away in the direction of the kick starts running in the same direction at the same instant of the hit. Very beautiful problem, beautiful।
देखिए यहाँ से उस प्लेयर ने फुटबॉल किक किया, ये उसने 45 डिग्री पे kick किया। तो ये बॉल ऐसे इस तरफ जाएगा, जैसे ही इसने बॉल को किक किया, एट द सेम इंस्टेंट अनदर प्लेयर, अब इसका स्पीड वीड अपने को पता है, स्पीड अपने को पता है 20, so I can say this is equal to 20 into 20, that is 20 का square upon g is equal to 10 ले लेंगे, so what is this equal to 40, 40 मीटर का उसका रेंज है, what is the range here 40 मीटर, another player 24 मीटर, मतलब यहाँ पर एक दूसरा प्लेयर है which is at a distance of 24 मीटर, यहाँ से वो 24 मीटर की दूरी पर है, से वो प्लेयर कितनी दूरी पर है 24 मीटर की दूरी पर है, जबकि हमारा रेंज कितना हमने देखा हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, व्हाट इज द रेंज दैट इज ओवर देयर, रेंज जो है वो 40 मीटर का है, जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया ना यहाँ पे, रेंज इज आर मैक्स, एंड दिस आर मैक्स इज इक्वल टू 40 मीटर, समझे? ओके, same direction at the instant. If he has to catch the ball just before it reaches the ground, he should run with a velocity. तो देखिए यहाँ से जैसे ही बॉल यहाँ पे किक ऑफ कर दिया, यहाँ से ये बंदा भाग रहा है, and he has to catch the ball when the ball strikes the ground. तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? अब मुझे बताइए उसका कितना डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, what is the distance that he is supposed to 40 minus 24 है ना, 40 minus 24 मतलब कितना हो जाएगा ये 16 मीटर, he has to cover the distance of 16 मीटर, और कितने टाइम में, इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, बराबर है क्या, इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, सो व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट हियर, टाइम ऑफ लाइट इज गिवन बाय 2u sin theta upon g, 2u is 20, sin theta is sine of 45, that is 1 upon root 2, and g is 10, so this gets cancelled, now root 2 ones are and root 2 cancel, तो ये आएगा 2 root 2, so what is the time there, 2 root 2 seconds, isn't it? Now what is the velocity, the velocity that he has to run with, which is equal to distance upon time, distance is 16 meter and time is 2 root 2 seconds, समझे क्या? तो कितना होगा उसका, this is equal to like 2 8 is, so 8 upon root 2 multiplied and divided by root 2, so this will become 2 4 is, so what is the velocity with which he has to run, 4 root 2 meter per second, 4 root 2 meter per second, B is the answer. I hope this is clear to you. Is this okay? Any doubts about that? Alright, we go for the next question. बहुत अच्छा question था ये भी, very interesting question. We go for the next question now. Question number 72. मुझे लगता है ये मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, फिर स्टॉप हियर फॉर फिजिक्स, I'll switch over to maths.